वेलकम बैक खुश आमदीद लेडीज एंड जेंटलमैन ख़वातीन हज़रात देवी सज्जनों दिस इज़ ज़ियाउर रहमान एंड माय नेम इज़ मिया अदनान। आप सब लोगों का एक मरतबा फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़ियाउर रहमान। ही इज़ अ मेन होस्ट एंड द को होस्ट ओवर हेयर। और हमने एक रिएक्शन सीरीज़ एज यू पीपल नो, अगर आप पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं इस चैनल को और रेगुलर हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हम न्यू आने वाले व्यूअर्स के लिए दोबारा से इंट्रो में इस चीज़ को शामिल कर रहे हैं कि हमने एक इन्फो एजुकेशनल सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम डिफरेंट ऐसी वीडियोस पर रिएक्ट करते हैं जिसमें जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ को एक्सप्लेन किया गया हो, जिसमें हिस्टोरिकल कुछ इवेंट्स को डिस्क्राइब किया गया हो, और डिफरेंट ऐसी जो भी स्ट्रेटजीज हैं डिफरेंट कंट्रीज अप्लाई कर रही हैं, जियो पॉलिटिकल इशूज़, हिस्टोरिकल काफ़ी सारे इवेंट्स जो होते हैं उनको ये डिस्क्राइब करते हैं और इससे काफी सारा कंसेंसस डेवलप करने का मौका मिल रहा है। और एक कॉमन पॉइंट की तरफ मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके पर्सपेक्टिव को समझते हुए आगे जाते हुए एक कॉमन पॉइंट बनाने की कोशिश हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। और इरादा ये है कि एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स या एक पॉलिटिकल डिबेट का प्रॉपर फोरम दिया जाए जिसमें बातचीत करना आसान हो सबके लिए और एक दूसरे से सीखा जाए, कमेंट सेक्शन से सीखा जाए, एक दूसरे से बात करके सीखा जाए और प्रॉपर एक अमन का पैगाम आगे दिया जाए। जी, और आज अगेन हम थिंक्सchool जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उनकी एक ऑफिशियल वीडियो है जिस पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। जी, इसका टाइटल है इंडिया हैज़ अ न्यू प्रॉब्लम इन द इंडियन ओशन। जी, आगे हमने बताया मालदीव इंडिया चाइना सीरीज़ है, उसकी एपिसोड 2 है। तो ये आप लोगों की तरफ से इंस्टाग्राम पर जिया भाई को स्पेशली डीएम किया गया कि आप इस पर रिएक्ट करें। तो ये बेसिकली इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेटेजी से रिलेटेड ये एक वीडियो है। तो आज हम बगैर देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जिया भाई, हियर वी गो। India out is not a campaign slogan anymore, it is now government policy. Okay. These cannot be seen as an Indian military presence on the island like it's being pointed out, like this so-called soldiers. Without naming India, Mohammad Muizzu pledged to remove the Indian military presence from this small but strategically important island nation. Now, Maldives sits in a strategically vital position in the middle of the Indian Ocean. China's aggressive maneuvering has been a cause of concern among its neighbors, whether it's South China Sea or the Indian Ocean. The Indo-China power dynamics. Hi everybody, the Indian Ocean is by far one of the most important regions in the geopolitics of the world, and it's been significant not just in the 21st century but ever since the 13th century. In fact, an historian Alfred Mahan once said, whoever conquers the Indian Ocean will dominate the whole of Asia. And now, the geopolitical war in the Indian Ocean has been heating up in 2023. And this time, it's because of a small island country that we all know as Maldives. Last August, India noted the presence of a Chinese surveillance vessel Yuan Wang 5 in the Indian Ocean. This further prompted the Indian Navy to raise the red flag Strategies against की गेम चल रही है ना, it's all about India and China in this region. Yes, yes. Chinese vessel in the Indian Ocean region, the large presence of Chinese units in the Indian Ocean region. On 4th of October 2023, the election results of Maldives was announced, and the moment the new president came to power, it was bad news for India. Because as soon as he came to power, he asked the Indian military forces to withdraw from Maldives. And guess who's happy because of this? China. The Maldives elected a new She president. would Among be. his many campaign promises was India out, to expel Indian soldiers from the Maldives. The new president-elect is widely reported as being pro-China. Now, if you look at Maldives, it's a very small country. It's just 298 square kilometers in area, which is half the size of Mumbai. So some people might ask, dude, India and China are such mammoth countries. Why would they give a fish about The Maldives? location, the position Well, as it matters. turns out, Maldives is located at by far one of the most important points in the geopolitics of the world. And considering the Russia-Ukraine war, the Arab-Israeli tension and the China-Taiwan tension, these geopolitical points have become more important to defend than ever. And Maldives specifically has been so important that even though Maldives has a GDP of just $5.4 billion, India has given a $100 million loan to Maldives. And at the same time, China has been building roads and bridges and even hospitals for Maldives along with a $1.5 billion loan. So the question is, what is so special about Maldives that it is being coddled by two giant economic powers of Asia? Why is the location of Maldives such an important point in the geopolitics of the world? What has this new president brought to the table? And most importantly, now that we've been asked to leave Maldives, how does it make us weak in front of China?
What a beautiful nation. What a beautiful, Sure, beautiful let's island. start with the basics and understand what is so special about Maldives that two giant economic powers are trying to please them. You see, guys, the Indian Ocean has some of the world's most important SLOCs or sea lines of ये communication. राहदारी जो है ना, These sea समुद्र की lines राहदारी carry बड़ी इंपॉर्टेंट है. two-thirds of the Yes. world's oil shipment, one-third of the bulk cargo traffic, and half of the world's container shipment. This is the reason why Alfred Mahan said, whoever conquers the Indian Ocean will dominate the whole of Asia because they can take control of the most important choke points of the world. And guess what? Maldives sits right in the middle of the Indian Ocean, which makes its location very, very significant. And this is because of the modern trade routes. So let's dig deep and try to understand the significance of Maldives' location. You see, guys, sea lines are just like highways in the ocean. So, just like highways connect different cities on the land, sea lines of communication connect the most important trade points in the ocean. So, if somebody blocks these lines, then they can choke the world trade itself. Now, here some people might say, bro, listen, we use a highway because we cannot hop, skip, and jump over trees and hills. But in an ocean, if somebody blocks one route, we can easily take another route, right? And when the ocean is so goddamn huge, why are these sea lines important? That's a Well, big you are question right. also. You can take routes as you like in the ocean. But if you see this map, you'll notice that most of the SLOCs are nothing but displacements between 2 points. As in, they are the shortest distances between the 2 points that they are connecting. So if you do not use the SLOCs, as the routes get longer, your time and cost of shipping will Yes. increase. And secondly, चाइना इसीलिए sometimes तो इन्वेस्ट कर रहा है SLOCs may ना. not be the Yes, in shortest route, Pakistan, but they could be in the Maldives, safest routes in even the in ocean. Bangladesh, Sri So Lanka. SLOCs yes, are in often chosen Afghanistan based now. on water depths, predictable currents, and the absence of obstacles like reefs or ice. So calculated route data enables the ship to navigate with lesser risk. So it's not just about time and money, but also about safety. If this is very, very clear to you, let's understand why is Maldives such an important player in the global economy. If you see this map, the 8-degree channel, which is just above Maldives, it is a critical choke point. And in this map, you'll notice that most of the SLOCs, which are going from Asia to the Middle East, Europe, and other Western nations, they are passing through Channel 8 or Channel 9. So Maldives is positioned like a toll gate in the middle of the Western Indian Ocean choke points. So it has the Gulf of Eden and the Strait of Hormuz on one side and the Strait of Malacca on the other side. So basically, Maldives is very close to the shipping routes of the world. So just because Maldives is closer to a few sea lines, why are India and China battling up to Maldives? How does this make any sense at all? Well, in geopolitics, it does make sense because islands near important sea routes are not just islands, but they are also acting as unsinkable aircraft carriers. Yes. So, to ordinary people like you and me, Andaman and Nicobar Islands might seem like just another bunch of islands. But from a military standpoint, these islands are huge aircraft carriers that cannot be sinked easily. And this is where the importance of Maldives comes in. You see, whoever has a presence in the Maldives, they will have an unsinkable aircraft carrier near the 9th and the 8th degree channel. And using these points, the Navy can monitor and secure SLOCs during peacetime, and at the same time, they would have an option to cut off the enemy's access to these SLOCs during wartime. Meaning, during war, supply of essential goods can be cut off to paralyze the enemy who is far away. In fact, this strategy has even been published in the official naval doctrine of India. And this sea lane is very, very important for India and China both because 50% of India's external trade, 80% of energy imports, 84% of China's energy requirement, and more than 65% of the world's oil trade is transported through these lanes. These routes. So the country which has a major influence on this island will eventually have the opportunity to set up permanent posts to monitor and detect enemies, gather intelligence, track shipping trends in the region, and also get the subsurface oceanic data for submarine deployments. So basically, India and China could build a freaking fort in the ocean using Maldives. This is the reason why this 8th and 9th degree channel are so important for India, China, and the world itself. If this is very, very clear to you, let's move on to the next part, which is the current political situation in the Maldives. Now, to understand this matter deeper, you need to understand something that's very basic when it comes to the domestic politics of Maldives. Turns out, India has historically had a great relationship with Maldives, but from 1985 onwards, Chinese companies began entering the project contracting business in the Maldives. And by 2001, the total value of their contracted projects reached $46.37 billion.
Now, for a country which had a GDP of just $870 million in 2001, $46 million was almost 5.3% of their GDP. So this was a big, big deal for Maldives. And when the first democratic elections were held in 2008 in Maldives, one party would campaign as anti-India or pro-China, and the other party would present itself as pro-India or anti-China. So in 2008, when Mohammad Nasheed came to power, it was good for India because he was a pro-India candidate. And by leveraging his inclination towards India, in 2008, Maldives and India signed a defense cooperation agreement. And according to this agreement, India would install 26 radars on the small coral islands, out of which 10 have already been installed. And the relations between India and Maldives were so good that India even agreed to provide Maldives with a through helicopter and help them establish a 25-bed military hospital in Maldives. And today, the total investment of India in Maldives stands at billions of dollars. So for years, India has focused on neighborhood first and Maldives has focused on India first policy. So India and China both continue to invest and used Maldives as their battleground to enjoy domination in the Indian Ocean region, which is right now very, very important for global trade. But recently, something crazy has happened with Maldives when they got a pro-China president named Mohammad Muizzu. And because he is backed by China, he has asked 75 Indian military personnel to leave Maldives. President-elect Dr. Mohammad Muizzu of the Maldives, who's seen as having pro-China leanings, made his first statement regarding the removal of foreign soldiers from the Maldives within the confines of the law. Dr. Muizzu fought his elections on this so-called India Out campaign, and now he is living up to his campaign promise. And you know what? If this continues, not just India, but many other countries will be threatened by China's dominance in the Maldives and the Indian Ocean region. Because as we all know, China has already laid the foundation with its string of pearls theory. So now, it has the Gwadar port in Pakistan, Hambantota port in Sri Lanka, Chittagong port in Bangladesh, Djibouti military base in Djibouti, and Bagamoyo port in Tanzania. So now, with Maldives बहुत बड़ी dominant, बहुत बड़ी गेम खेल रहा है yes, and economically they are एंड एट द सेम टाइम इंडिया भी इस हवाले से अपना जो है ना स्ट्रेटजी पर This is काम कर what रहा है we have to wait and watch because, like I said, considering the Russia-Ukraine war, the Arab-Israeli tension and the China-Taiwan tension, these choke points have become more important to defend than ever. So all you have to do is wait and watch and see what does India do in response to this Chinese strategy. That's all from my side for today, guys. If you learned something valuable, please make sure to hit the like button in order to make YouTube ever happy. Original link of this video would be in the description, ladies and gentlemen. And what a fine video. yes, आज हमने इंडिया चाइना, मिलिट्री टेंशन, मालदीव्स, इकोनॉमी, सी रूट्स, सभी कुछ था इस वीडियो में. yes, तो ये फायदा है, मतलब ये जो सीखने का अमल है बड़ा मजे का है. मतलब कुछ तो वीडियोस होती हैं जो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, लेकिन हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि हम इस तरह की वीडियोस, इसमें आप मल्टी डायमेंशन से चीज़ों को सीख रहे हो तो और बहुत इनक्रेडिबल तरीके से जो जिस तरह से मैप का इस्तेमाल ये करते हैं, ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके दिखाते हैं और बड़ा सिंपल तरीके से जो लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल बात को बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो उन्होंने उसमें बेसिक clear किया. जवाब, मतलब जिनके हमेशा हर बंदे के दिल में ये सवाल आएगा कि मालदीव्स इस कदर इम्पोर्टेंट कब से हो गया. मतलब छोटा सा नेशन, चंद आइलैंड्स पे मुश्तमिल एक नेशन, मतलब इस कदर इम्पोर्टेंस कहाँ में कैसे हो गया कि दुनिया के दो बड़े जायंट्स, इकोनॉमिक जायंट्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं मालदीव्स में और उधर ही डोमिनेट करना चाहते हैं. At the end, it's all about trade or roots. Economy, it's all about the economy. Whoever will dominate the economy of Asia will dominate Maldives and will dominate sea routes in Indian Ocean. बिल्कुल उसी की गेम चल रही है, उसी वजह And so far, on a neutral stance, if you see that China is by far ahead and China is winning the war. चाइना साइलेंटली काम करता है. Yes, they have done so much in last 20 to 25 years. Talking about the Gwadar, Chittagong, in Sri Lanka, they have a port, they have airports. Everywhere around the world. मतलब स्ट्रेटेजी बहुत मजे की है. पहले उस कंट्री में लैंड करो, पैसा फेंको, yes, उनको अपने एहसान तले दबाओ. पाकिस्तान में भी yes, we needed someone to build Gwadar fort for us, but they are building Gwadar port for us and they are making a fort for themselves. तो वो जो एक कॉलोनाइजेशन के जो डेफिनेशन थी ना, शायद न्यू कोलोनियलिज्म, दिस इज अ न्यू कोलोनियलिज्म. तो वो वाला कहीं ना कहीं चीजें चल रही हैं, उसकी ऑब्वियसली शक्ल तब्दील हो गई है. यस. तो इस हवाले से इंडिया को बहुत बड़ा एक तरह से हैरत की बात ये है कि इवन दो इकोनॉमिकली इस टाइम पे चाइना की इन्फ्लुएंस हमारे मुल्क में ज्यादा होना चाहिए, बट जो हमने पिछले साल के दौरान देखा है,
अमेरिकन इन्फ्लुएंस इस खित्ते से खत्म नहीं हो रहा। इसकी कोई बहुत बड़ी डीप रूटेड वजह है, और मेरे ख्याल में चाइना का इन्फ्लुएंस फिर भी किसी ना किसी हद तक समझ में आता है, बिकॉज इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, और साथ साथ जुड़ा भी है। यस, और अमेरिका साहब तो वहाँ बैठा, उसके पीछे देखो ना, वो भी ब्रेन गेम है। यस, जो लोग हैं वो प्लांटेड किस तरह से वो रखता है हर कंट्री में। Yes. और ठीक है, they have played the world for last 30 years और they know the game very well। वो ये खेल बहुत लंबे अरसे से खेल रहे हैं, तो वो तो बहुत अरसे से उन्होंने जिस तरह पूरी दुनिया में ही डोमिनेट करके रखा हुआ है, और दुनिया का कोई मुल्क शायद ऐसा नहीं है जिसमें अमेरिकन इन्फ्लुएंस ना हो। लेकिन इस टाइम पे लग ऐसे रहा है कि दुनिया दोबारा से यूनिपोलर से अब बायपोलर नहीं होगी, कई डिफरेंट पोल्स बनने जा रहे हैं। रशिया मल्टीपोलर जो Yes. निजाम है वो भी यहाँ पर दुनिया में आता हुआ नजर आ रहा है, और वी हैव टू क्लैरिफाई, वी हैव टू आइडेंटिफाई विच पोल वी स्टैंड विद, क्योंकि एट द स्ट्रेटेजिक पोजीशन वी हैव इस खित्ते के अंदर किस पॉइंट पे स्टैंड करना है यूज होने के लिए। यस, यस, नॉट यूज होने के लिए नहीं, वी हैव टू। देखो पाकिस्तान ने कम से कम लिया, ज्यादा सफर किया है। यस, ये एक हकीकत है, लेकिन जिस तरह की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं, कोई माने या ना माने, वी हैव टू हैव समवन्स बैक। मतलब हम लोग किसी जगह पे किसी न किसी के साथ खड़े होंगे। चाइना है, either it be India, either it be China, either it be Russians, either it be Americans। हम लोगों को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि what pole we stand with। पाकिस्तान हमेशा से कंफ्यूज्ड स्टेट रहा है। यस, और क्लैरिटी जब होती है तो आप उसी हवाले से अपनी देखिए, policy जब बनाते हो, आपकी अपने मुल्क के अंदर देखते हो। डेमोक्रेसी होती है तो आप इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ जाते हैं। पहले आपको मुल्क में डेमोक्रेटिक रवैये और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। जब शख्सियात इदारों से बड़ी हों तो इस तरह की कंफ्यूजन नजर आती है। इदारे कंफ्यूज नहीं होती, शख्सियत कंफ्यूज हो सकती है। एक फर्द वाहिद जब फैसला कर रहा हो तो वो इस तरह के गलत फैसले लेता है। इस मुल्क में इदारों को कमज़ोर किया गया है, आर्टिफिशियली कमज़ोर किया गया है। इस मुल्क में जिस दिन इदारे मजबूत होंगे, खा वो हमारे इकानमी के इदारे हों, खा वो हमारे FIA, NAB इस तरह के इदारे हों, खा हमारे ट्रांसपोर्टेशन के इदारे हों, खा हमारे शिपिंग यार्ड हो, हमारी कोई भी इंडस्ट्री हो, जब इदारा मजबूत होगा और शख्सियात परस्ती से हम बाहर निकल आएंगे तो होपफुली विल नॉट बी दैट कंफ्यूज। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप जैसे बात करें, कुछ शख्सियात जो हैं वो उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है, क्योंकि पावर उनके पास बहुत ज्यादा है, Yes. तो वो हर इदारे में घुसकर जब एक जगह पे पावर कंडेंस हो जाती है और एक जगह डिसेंट्रलाइज पावर ना हो तो इस तरह के मसले होते हैं। हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना है इस मुल्क में, ताकि हम अपने इस खित्ते में मौजूद दो बड़े जायंट से कुछ सीख सकें और आगे Yes. बढ़ सकें। और हमारी तो उम्मीदें भी यही हैं कि किसी न किसी तरह हमारा नाम भी किसी अच्छाई में आ गया है, और यही हमारी हमेशा से दुआएं रही हैं। इट्स टाइम फॉर साउथ एशिया, इट्स टाइम फॉर एशिया। यहाँ पीस हो, स्टेबिलिटी हो, डेमोक्रेसी हो, और पॉलिटिकल जो भी टेंशंस हैं हमारे वो खत्म हो। बातचीत से हल की जाए। यस, आप लोग ये चीज़ फील कर रहे होंगे कि यार टुडे द वीडियो बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है, चीज़ क्या, और ये कहाँ पहुँच गए अपने मुल्क पर। यस डेफिनेटली, हम जिस मुल्क में बैठे हैं, यहाँ के जो मसाइल हैं, हम उस पर वो स्पॉटलाइट बन जाते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो हम देखते हैं कि यार हम इससे क्या सीख सकते हैं और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हमारे खित्ते में दूसरे दो मुल्क क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ना चाहते हुए भी ये बात इसको तरफ निकल जाती है। और हर बंदा, मेरे ख्याल में कोई भी दिल रखने वाला इंसान अपने मुल्क की मोहब्बत से आरी नहीं होता। बिल्कुल, जब मसाइल अपनी जगह, इख्तलाफात अपनी जगह, मसाइल अपनी जगह, बट वी आर लिविंग इन दिस कंट्री एंड वी लव दिस कंट्री फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट, नो मैटर व्हाट, दिस इज आवर होम। घर बुरा नहीं होता, घर वाले बुरे हो सकते हैं, घर के अंदर कुछ मसाइल हो सकते हैं, और ये मसाइल हम लोगों ने ही फिक्स करना है, और होपफुली विल फिक्स देम सून। नो मैटर व्हाट, जो भी हालात हो, हमारे लिए ये मुल्क हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इन्हीं दुआओं के साथ कि ये खित्ता तरक्की करे और इस मुल्क के हालात बेहतर हों या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखें। लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह हाफिज एंड पीस आउट। उलट हो गया ना, दोबारा से करते हैं। चले चले, अल्लाह हाफिज एंड पीस आउट।